Hello friends, today we will discuss the topic that is chain configuration and conformation of macromolecules. As we all know, configuration means the form of a molecule that can be interconverted only with the help of bond making and bond breaking. Similarly, for a macromolecule, the conformation is interconversion of forms that are interconverted with rotation of bonds. So, we will focus mainly upon the chain configuration of macromolecules, polymers. This is your unit 5 of biochemistry, and this basically includes the part in which we will discuss the polymer chain configuration. So, if we see this diagram where we have shown that this is a randomly coiled polymer chain, what is our motive? We want to understand how a macromolecules chain is there and how can we determine various parameters of the macromolecule. So, best model which interprets this is randomly coiled polymer chain, where we can see all the bonds which are being formed are, you can see these are random bonds. Random bonds means the angle present between subsequent two bonds is not same as the next two. That is, first bond can form any type of angle with the next bond, and the next one is also free to form at any bond. So like angle is different with every subsequent bond. So we will start here. We take the random walker structure, where random walker start walking from here. It goes like this throughout this polymer chain and finally it reaches to the end. In this model, the first terminology which is being used is contour length, that is RC. Contour length is represented by RC. If we have the length of macromolecule that is measured along its backbone. Backbone means we will go through atom to atom. We will go like this. Every atom, with every atom we will going to be measuring the length. And this RC is being represented by NL, where N is total number of monomer unit. Like here you can count how many monomers are there and length of each unit. हर monomer unit की कितनी length है वो, और कितने number of monomer unit है, overall कितनी length आती है, that is known as the contour length. The next terminology which is being used, that is the probability, that is being represented by FR/dr. You can find here we are talking about the net distance, that is from here to finally this. In the last one we were going through atom to atom, and here we are going to from this one to this one, that is the net distance. Now we move towards this FR. We have to calculate this FR, and for this you should know there is a standard formula of FR, that is A upon pi to the power half to the power 3 4 pi r square e to the power minus a square r square, where a is a constant, that is known as 3 upon 2 nl square. Here n is number of bonds and l is length of that bond. कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, कितनी लेंथ है. 3 अपॉन 2 NL स्क्वायर को एक कांस्टेंट A से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम नीचे यूज करेंगे डेरिवेशन में. सो द नेक्स्ट थिंग which we are going to talk about is RRMS, that is your end to end distance of the chain. End to end distance of the chain. रूट मीन स्क्वायर रेडियस या चेन लेंथ आप कह सकते हैं इसको. RRMS अगर हम देखें, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinite. Here we have r square FR/dr to the power half. Now this is your probability, and इस probability की जगह पर आप जो ऊपर आपने अभी फॉर्मूला यूज़ किया था वो फॉर्मूला आप प्लेस कर देंगे. आफ्टर प्लेसिंग दिस फॉर्मूला यू विल ओपन इट. अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे सो दैट जो इंटीग्रेशन का साइन है हमें मालूम है, जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, और यहाँ अंदर वो रह जाएगा जिसको कि हमें इंटीग्रेट करना है. इसका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आंसर होता है जो कि ये है, ठीक है. और अभी हमने पूरे पे आप देखिए ब्लू कलर पे हाफ लिखा हुआ है, यहाँ सब जगह पर हाफ जो चल रहा है वो यहाँ से आ रहा है, तो इसको मैंने अलग से आपको ब्लू कलर से लिखा है जिससे आप पता कर सको कि हाफ जो है वो हम फाइनली इसको सॉर्ट आउट करेंगे.
अब अगर हम यहाँ देखें दैट इज a³ अपॉन पाई टू द पावर 3/2, ये 3 आपका यहाँ आ गया। अभी हम इस ब्लू वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। a³ अपॉन पाई टू द पावर 3/2, 4 पाई, 3 पाई हाफ 8a5। इसको हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 3/2a² टू द पावर हाफ। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं। कैसे? अभी अगर हम यही फॉर्मूला हमें पता है कि a² किसके इक्विवेलेंट था, आप यहाँ देखिए हमने अभी ऊपर बात की थी a² इज इक्वल्स टू 3/2 nl²। अगर मैं इस a² को इधर लाऊं तो बन जाता है 3/2a² और ये nl² लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। सो आई कैन से nl² इज इक्वल्स टू 3/2a²। सिमिलरली वी आर गेटिंग 3/2a²। सो आई विल राइट हियर nl² टू द पावर हाफ एंड यू कैन फाइंड, अगर हम इसे सॉल्व करें, अब हम फाइनली इस ब्लू वाले स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये हाफ जो है वो n पे आ जाएगा और l टू द पावर आ जाएगा, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू l ओनली। सो फाइनली वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज RMS, दैट इज योर रूट मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ द चेन। इट इज इक्विवेलेंट टू n टू द पावर हाफ एंड l। n और l क्या है ये हम पहले बता चुके हैं। और भी इसके कई पैरामीटर्स हैं जिनको हम जो सबसीक्वेंट हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।